Hello everyone, welcome back to my channel Evolve with Jasmine. Today we have amazing speaker Sachin Dahiya. So hello Sachin. Hi, Jasmine. Thank you so much for inviting, and yeah, very good afternoon to all the people who are joining us live. Right. So Sachin, I know you have done amazing job and you're doing amazing work as well. So काफी लोग आपको जानते हैं, but the audience जो आपको नहीं जानती है उनको अपना थोड़ा सा एक formal introduction दीजिए please, so that they can know who you are and what you do. Okay, great. Thank you so much, Jasmine, once again. So basically, I'm a business owner having two different businesses right now. So I'm a habits coach where I help people in their habits, consistency, productivity, time management, and double their sales in 3 months through my business. One of the business that is the consulting. That is one. And secondly, I'm the senior vice president in one of the world's leading mastermind community for coaches, that is Teachers Are Leaders. And there I act as a business consultant and how they can grow their coaching and training business. Apart from that, I'm the author of two different books on habits, which I wrote in last 2 3 years. And I'm also a TEDx speaker. I got the opportunity to speak on TEDx stage last year. So this is just a brief about me. And apart from that, I help so far on more than 1,000 people all together in their journey, in their building businesses, habits, consistency from 12 different countries. And yeah, one good thing about me is that I love reading books. I consider it a good thing because it has really helped me in my life. And I read one book per week. So this is just a brief introduction about me, Jasmine. Yeah, that's really great and inspiring. So, hi Grow Up, hi Sharma ji, hello अलका जी, आप सब लोग का वेलकम है. And today we have Sachin. Sachin ने अभी अपने इंट्रोडक्शन तो दे दी है, but of course, Grow Up that really helps you out अगर आप sales and all में देख रहे हो. He is the champ into this part, so try to utilize this session as much as you guys can. सो मुझे Thank ये you. बताओ, आप इतना कुछ कर रहे हो, व्हाट इंस्पायर यू टू बी अ हैबिट कोच? आपने हैबिट कोचिंग ही क्यों चूज करी? All right, so I will would love to share a backstory to it, how it all happened to me, right? And although ये कभी intention मेरा था भी नहीं coaching में आने का, I was never want to become a coach. कुछ ऐसा सुना भी नहीं था, goal भी नहीं था. But as you know, in destiny, you never know what is written, and everything happens for a good reason. So, Right. Jasmine, let me take you back to my work. This corporate experience that I was having. So after Mhm. college, as we normally we start with a job and went into corporate culture. So that's where I was having certain habits in my life which were really helpful. I was living a happy life, and as we all know, in corporates we have a lot of stress and workload, and that started to happen. And जब वो फेज आया मेरा, मैंने स्ट्रेस लेना काफी शुरू कर दिया काम को लेके, because I was growing in the organization. And as you grow in the Mhm. organization, you take a lot of stress because you make those decisions, right? Which Right. determines the department on all that stuff. तो उनके वो काफी वो स्ट्रेस आना शुरू हुआ. एंड वहां पे मैंने देखा, आई स्टार्टेड टू disrupting my habit cycle. लेट उठना, सॉरी लेट सोना, लेट खाना खाना, एंड बस काम पे ही ध्यान देना. I stopped focusing on my health also. I gained a lot of weight during that time and all. So वो मुझे काफी, and that moment I realized I'm hating my own self. When I was used to look in my mirror, मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी थी, because I was not feeling happy. Because my identity as an individual, I always, my health used to be my priority always. मैं अपनी Oh. हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी देता था, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेडिटेशंस, एंड प्रॉपर एक शेड्यूल में. बिकॉज थैंक्स टू माय पेरेंट्स एज वेल, आई एम कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर लॉट ऑफ माय कजन्स, my relatives are into defense and all that stuff. So there is a discipline already, वो बचपन से इंस्टॉल था ही मेरे अंदर. Always waking up early in the morning. इवन 6 और 7 की जब मेरी एज होती थी, मैं 4 4 बजे उठ के दौड़ने जाता था. So I can just recall that stuff. So all these small my upbringing and then my overall things, that really helped me to having those strong habits in place for myself. Right. But जब वो corporate का phase आया, everything changed and I started to hate my own self. But वो phase फिर जब वो चलता गया, I told myself, no, this is not where I want to be. I'm hating myself. I need to take some actions here. I need to do something different. And at the same time, I was also thinking to start something of my own, that which was always there, right? So everything come into what do you call come together. And that moment in 2019, I told myself, enough is enough. Now I had to quit this thing,
because I cannot move forward with this. And I just saw my face of my manager, and he was so frustrated and so angry. तो मुझे लगा कि मुझे एटलीस्ट ये तो नहीं बनना अपनी लाइफ में अगले 1-2 साल में, नहीं, ये दिस इज नॉट वेयर आई वांट टू बी. And then I took the decision, and I think that's the best decision of my life, to quit my job and get into starting my, finding that mojo, finding that idea, what I can do. एंड उस मोमेंट में मुझे क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं था कि मैं क्या शुरू करूंगा अपनी लाइफ में. आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई ओन सेल्फ, जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती थी. लाइक आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस ऐप डेवलपमेंट एंड कोडिंग एंड ऑल, बिकॉज मैं बहुत सुना था आईटी के लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं एंड ऑल. सो बस क्यूरियस Right. करते हैं क्या लोग हैं, वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, ऐप कैसे डेवलप होती हैं. सो आई स्टार्टेड लर्निंग दैट, एंड आई डिड दिस, एंड I got the paid project as well through freelancing on that. Then I learned about marketing. Then I learned about certain business angles. And then suddenly in 2019, 2020, ke early, I think it was January only. And I saw one ad of one of the communities that we are part of, Teachers Are Leaders. And उसमें मैंने पढ़ा कि अगर आपको बिजनेस के बारे में और जानना है तो ज्वाइन दिस वेबिनार. तब मैंने वो वेबिनार सिर्फ ज्वाइन किया था बिजनेस की लर्निंग्स के लिए. एंड इन दैट वेबिनार आई गॉट सो मच वैल्यू. I told this is what I want to learn. This is what I was looking for. And Right. although मैंने कोचिंग ट्रेनिंग का कभी नाम नहीं सुना था 2019 से पहले, although I was having that band, मैं टोनी रॉबिन्स का बड़ा फैन हूँ और मैं काफ़ी चीज़ें उनसे बहुत कुछ सीखा है थ्रू हिज वीडियोज एंड इंटरव्यूज एंड थ्रू हिज बुक्स एंड ऑल. सो उनका मुझे पता था कि हाँ कुछ ऐसे ट्रेनिंग या कोचिंग होता है, बट नेवर थॉट कि मैं कभी कोचिंग एंड ट्रेनिंग में आऊँगा. But that as we joined TLC, then my mentor really helped me, in finding that niche, what I can teach and what I can start sharing. And that's where habits come into picture, and that's what I realized. Yes, हैबिट्स आर समथिंग. व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक नाउ, आई थिंक वो जो एक डिसिप्लिन लाइफ था वो मेरे बचपन से ही मेरे अंदर था. आई वाज ऑलवेज दैट मच डिसिप्लिन, इन दैट सेंस. सो उसने मुझे काफी हेल्प करा, एंड देन आई रियली फील दैट इज रेजोनेटिंग विद मी, कि ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, हैबिट्स. एंड फिर मुझे दूसरी चीज ये भी लगी कि हैबिट्स ही तो हैं जिसमें लोग काफी स्ट्रगल करते हैं. इफ यू वांट टू अचीव True, एनीथिंग इन योर true. लाइफ, आपको Right. हैबिट्स होने बहुत जरूरी हैं. कंसिस्टेंट हैबिट होनी चाहिए. आप बिजनेस ओनर हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो आपको हैबिट्स करना है. तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया कि मेरे को जो मेरे मेंटर ने नीश क्लैरिटी के थ्रू बताया कि आप हैबिट्स को पिक करो, हैबिट्स स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट शेयरिंग दैट. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन दैट एज वेल, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी बहुत होती कोई चीज़ों को लेकर, और मैं बहुत क्यूरियस था इन चीज़ों के. तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, मोर देन 100 बुक्स. आई थिंक ओनली हैबिट्स के चक्कर में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुका था. देन डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, and then yeah, where I am today, I'm really happy. So that's the entire backstory of this habits coaching, and now I really enjoying it, and really super feel gratitude for my mentors as well कि इन्होंने ये टाइटल मुझे दिया हैबिट्स कोच का. And yeah, I think it's been really amazing journey so far, and looking forward to help a lot of people throughout the world. So yeah, this is my journey, Jasmine. थैंक यू, इट्स रियली अमेजिंग. एंड आई गेस ये जो हैबिट्स कोच है ना, ये बहुत यूनिक है अपने आप में. It's I Absolutely. hardly heard about this thing. Happiness coach are there, so many other coaches are there, but habit coach, it's a unique. So, what are the Very very common challenges? yeah. Sorry. Just to add to that, so there are very few, I think, मैंने भी कभी नहीं सुना था कोई हैबिट्स कोच होता भी है कोई कहीं पे, Hmm. thanks to TLC in that sense. And also then I realized कि west में there are a lot of people who are working on habits, but in India there are very few people who are still. If you're gonna Google it on or YouTube it, you will find very few people in India still who talks about habits coach or who have that title. So yeah, in that sense it's unique. But since things are growing, I think we will see more and more people come into this field of sharing people on habits, because this is the most fundamental thing but most important thing, that is habits. Yeah, over to you. Sorry. Right. So, thank you so much for this amazing journey. अब मुझे ये बताओ कि Welcome. लाइक हम लोगों की लाइफ में जैसे हम एज कोचेज हैं, तो आपके लिए कौन कौन से कॉमन चैलेंजेस रहे हैं व्हेन पीपल कम टू यू कि लाइक ओके मुझे अपनी हैबिट्स डेवलप करनी है? व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस दे फेस? That's a really great question, Jasmine, because challenges हर किसी की लाइफ में होते हैं, पार्ट होते हैं उसका, बट हाउ यू कम आउट ऑफ दैट, दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट.
सो पहले मैं अपने चैलेंजेस शेयर करूंगा जो मैंने फेस किए थे इनिशियली ड्यूरिंग माय ग्रोथ पीरियड, जब मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो एक ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ में जिसने कंप्लीटली चेंज कर दिया मेरा पर्सपेक्टिव. And then what people usually ask on day to day basis, right, through in my like coaching and clients and all. So my again I face the similar challenges जो normally किसी भी कोई भी person face करता है. That is how to stay consistent, right? पता है मुझे कि मुझे ये काम करना है, मुझे आई नो कि मुझे एक्शंस लेने हैं, बट आई एम नॉट डूइंग इट. आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट, आई एम राइट. लेजी. कुछ और प्रायोरिटीज आ गई लाइफ में, कहीं और फोकस चला गया, या माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, रील देख रहे हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हैं. बट मुझे पता है वो काम करना है, बट मैं वो कर नहीं रहा हूँ कहीं ना कहीं, राइट? सो ये चैलेंजेस मैंने भी फेस किए थे उस टाइम में जब मैं अपनी उसमें था, जॉब पे था. दैट and particularly about my health, as I shared with you, it's very close to my heart because of the background that I'm having, just staying disciplined and all. जब वो मैं नहीं कर पा रहा था, अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था, लाइक फॉर जिम एंड वर्कआउट एंड ऑल, वो वाला जो मोमेंट था वो मुझे बहुत यूज टू, व्हाट आई से, आई यूज्ड टू क्रिब माई सेल्फ, आई यूज्ड टू क्रिब अ लॉट. एंड वो जब मैं अपने आप को देखता था मिरर के अंदर, गेनिंग वेट एंड डार्क सर्कल्स एंड वो ऑल दैट बहुत स्टफ, तो बहुत बहुत बुरा मुझे लगा था. एंड दैट इन दैट मोमेंट आई डिसाइडेड, whatever happen in life, one thing I will make sure that मेरी हेल्थ हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगी उसके बाद. तो वही 1 साल का कुछ पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें मैंने कुछ दिन ट्राई करा, फिर स्ट्रगल करा, फिर छूट जाता है, जैसे होता है ना. तो वो चीज़ें मैंने भी फेस करी अपनी लाइफ में. बट नाउ आई अंडरस्टूड, जैसे मैं ग्रो किया एज अ हैबिट्स कोच एज वेल, बिकॉज आप भी एक ग्रो करते हो एज अ कोच, राइट, इन योर कंटेंट एंड योर लर्निंग. तो मुझे आइडिया आता चला गया, वो पैटर्न में समझता चला गया कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है. ओके, गोल्स हम सबकी लाइफ में होते हैं, मुझे ये पैसे कमाने हैं, मुझे ये हैबिट पे काम करना है, ये हैबिट पे. बट वन राइट. थिंग आई रियलाइज दैट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी होना लाइफ में, कि वो चीजें आपको अचीव क्यों करनी है. पहली सबसे बड़ी चीज, अगर वो क्लैरिटी नहीं है, किसी और को देख के आप कह रहे हो अरे उसके पास वो गाड़ी है, या उसके पास वो चीज है, या वो ये काम करता है तो मैं भी करूंगा. दैट्स अ रॉन्ग राइट. अप्रोच दैट पीपल फॉलो, बिकॉज दे आर जस्ट ट्राइंग टू कॉपी पेस्ट अदर्स लाइफस्टाइल इन देयर ओन लाइफ. बिकॉज पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में देखना पड़ेगा. सो मेन चैलेंज रही सबसे बड़ा, द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड इज हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट. प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे भागें, कैसे लेजीनेस राइट. को दूर करें, कैसे गोल्स को अचीव किया जाए. एंड वो बोर्डम जो आ जाता है, एक हैबिट को आप बार बार करते हो रिपीट, तो एक बोर्डम आ जाता है, वो फिर आपका काम नहीं करता, वो करने का मन करता है. आई एम श्योर इफ लॉट ऑफ पीपल हु आर जॉइनिंग अस दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर इनटू दिस, लेट्स सपोज आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, आप 1 महीने के लिए एक्साइटेड हो, आप जा रहे हो, 2 महीने के लिए एक्साइटेड हो, जा रहे हो, तीसरे मन में वो बोर्डम आ जाएगा, नहीं यार आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, आज थोड़ा सा रुक जाता हूँ, कल जाऊंगा. सो देन वी स्टार्ट हैविंग दैट नैरेटिव, कल 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 करूंगा, कल करूंगा, शाम को करूंगा. So that's the biggest challenge people are facing. And then the more the information now is available, the more a lot of stuff is available for people, the more and more they are getting into this vicious circle of they're not able to stay consistent, they are procrastinating. बिकॉज चीज़ें इतनी सारी अवेलेबल हैं, मेरा फोकस और अटेंशन स्पैन इतना इंपॉर्टेंट है और इतना कम हो गया है आजकल. कुछ भी चीज़ हो जाती है, मेरा ध्यान उधर चला जाता है और मैं भटक जाता हूँ, और फिर वो काम क्या कर रहा था वही गायब. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली इन टुडेज टाइम. पहले तो कम होता था, अभी तो इतने सारा, जैसे मैंने बताया, सो मेनी थिंग्स आर देयर टू डिस्ट्रैक्ट आवर अटेंशन. And attention is the most precious thing today, and that's the biggest challenge that people are facing, Jasmine. दैट्स सो ट्रू. कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपके लिए, एंड वी हैव वन क्वेश्चन. जब इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपने सेशन में, एक क्वेश्चन ले लेते हैं. मिश्रा जी का क्वेश्चन Sure. है, आई एम डिस्प्लेइंग इट. हाउ टू फिनिश समथिंग यू स्टार्ट. सिमिलर Awesome. टू That's आवर्स. a great question. I think एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कभी अपनी मैनेजमेंट स्टाइल या अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को मेजर करना हो, पैरामीटर जो होता है, हमेशा देखो हाउ मेनी थिंग्स यू स्टार्ट एंड हाउ मेनी थिंग्स यू एक्चुअली कंप्लीट. तो आपको पता चल जाएगा आप कितने बढ़िया मैनेजमेंट मैनेजर हो अपने आप की लाइफ के. ओके, so that's the one quote or one tweet that I posted few years back actually now. So बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्रा जी टू अंडरस्टैंड कि भाई स्टार्ट क्यों करना है. सबसे पहले आई विल कम टू दैट पॉइंट एज वेल, कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्लियर होना कि हु यू आर. लोगों को आइडिया नहीं है हु दे आर, द गोल्स, वेयर दे वांट टू गो. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को पहचानना. सॉक्रेट्स ने कहा द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, द बेस्ट नॉलेज इज टू नो योर ओन सेल्फ, नो दाई सेल्फ.
ये एक सॉक्रेट्स जो स्टोइक फिलोसफी की मैं बता रहा हूँ। तो सबसे यही हमारी भगवत गीता में भी लिखा गया कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस यू आर अवेयर अबाउट हु यू आर, योर गोल्स, एंड देन जो गोल आपने रखा है वो क्यों रखा है, उसका भी एक वाई होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंटली। अगर मैं एक चीज कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए वाई आई एम इनटू दिस। And for that, then there are different steps that I will share, Mr. Ji, which will help you. I think, Jasmine, we're going to discuss on consistency as well, because स्टार्ट करने का एक वो पैशन तो सब में होता है, विल पावर सब में होती है, बट एंड करने का वो जज्बा नहीं होता बीच कि मैं बीच में एंड पे आके जाऊँ। मोटिवेशन लेवल ऐसे जाके गिरता है, इट्स गोइंग डाउन। So I will share the three simple steps how to stay consistent with your goals and habits. I'm sure that will answer this question. Jasmine, over to you. ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। एंड आई गेस अगर किसी को और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो बिफोर वी मूव फर्दर, कि जो सचिन लेके आए हैं अपने पास पिटारे में, सीक्रेट्स एंड ऑल, हाउ वी कैन डू ऑल दिस कंसिस्टेंसी, एंड कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने आप को एक रेगुलरली कुछ नई हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। बट सचिन, जब मैंने सुना है कि लाइक एक हैबिट को डेवलप करने के लिए वी नीड अ 90 डेज साइकिल, सो इज इट्स ट्रू 90 डेज लगते हैं, कि उससे पहले भी हो सकती है, कि ऐसा कुछ नहीं होता? ये सब नेट्स है। Absolutely. So there on the internet you will find a lot of things. Somebody will say 66 days, somebody will say 30 days, somebody will say 90 days. But ask your own self. अगर मैं 90 दिन तक ये एक्टिविटी को करता हूँ, ऑफ कोर्स देयर विल बी गुड रिजल्ट्स, आपको और रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बट डू यू थिंक बस मैं 90 दिन के लिए करूंगा वो फिर वो मेरी हैबिट्स हमेशा के लिए बनी रहेगी? डोंट यू थिंक ऐसा यू विल हैव अदर प्रायोरिटीज? 6 महीने बाद आपको पता नहीं कोई और गोल आपका हो जाएगा, कोई और विश हो जाएगी, आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे। सो जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि डू यू थिंक कि 90 दिन से ही मैं इसको करूंगा और वो मेरी हैबिट ऑटोमेटिक हो जाएगी? ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन बिहेवियर दैट आर रिपीटेटिव, वो ऑटोमेटिक होते हैं। 95% ऑफ थिंग्स वी डू इन अ डे, that's a research done by a lot of thoughtful leaders or people. 95% of things we do in a day are governed by our subconscious mind. That means they are automatic in nature. So आप सोचो अगर आपका पूरे दिन में 95% ऑटोमेटिक होती हैं चीजें, तो अब बाकी 5% थिंग है जिसमें आप डिसाइड करते हो एंड ऑल। सो इसलिए जानना बहुत जरूरी है अपने आप को, आपके सबकॉन्शियस में चल क्या रहा है, राइट? सो फॉर मी इन माय बुक एज वेल आई मेंशन दिस, जैस्मीन, do not go on these things. Of course it's good to start, to give you a goal, to give a direction to yourself. Okay, मेरे को ये काम करना है 30 डेज तक, आई विल स्टे कंसिस्टेंट। बाकी मैं डिसाइड करूंगा 30th डे पे मैं उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है। इट्स गुड टू डिसाइड, इट्स गुड टू टेक दैट थिंग फॉरवर्ड स्टार्ट करने के लिए, बट डू नॉट मेक इन योर हेड कि मैं बस 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन तक इसको करूंगा तो मेरी लाइफ भर ये ऑटोमेटिक रहेगा। आपने सुना होगा 15 डे रीडिंग, 15 डे चैलेंज, 20 डे चैलेंज, 75 डे चैलेंज एंड ऑल। दे आर गुड टू स्टार्ट एंड ब्रिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन, बट ट्रांसफॉर्मेशन लाना मेरा गोल नहीं होता, सस्टेन करना उस ट्रांसफॉर्मेशन को, वो मेरा गोल है। एक बार आपने कुछ अचीव कर लिया, आपको वहीं पे नहीं रहना है, आपको कंसिस्टेंटली करते रहना है थ्रू आउट द लाइफ। तो आपको उसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ता है। और जब आप लाइफस्टाइल की बात करते हो तो आई एम श्योर 60 और 90 दिन तक तो हम जिएंगे नहीं इस दुनिया में, ऑल्दो यू नेवर नो व्हेन योर एंड विल कम, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मेक इट अ लाइफस्टाइल rather than just deciding on those things. Yeah. Okay, nice, thank you। We have another question from Urvashi Jain: how many habits you should develop, and what is the secret you implement to follow your habits? Okay, that's a great question again, Urvashi. So there should be a no as such number कि 5 करनी है, 7 करनी है. It's more important what kind of habit. So as you, I'm sure you must have heard, it's not about the quantity, it's always about the quality. So what habits you are having in your day, how you start your day. Okay, now there are certain habits which I have in my day to day life. तो मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, सेम आई विल शेयर विद यू एज वेल, कि आप अपने आप को पहचानो एंड आस्क योरसेल्फ, ओके, do you need that those habits or not? So I wake up early in the morning, the first thing I do is my gratitude. Okay, gratitude for everything, for my parents, everything that is there. Then I take some breather and just I relax, and then I go for my physical workouts in the morning itself. That's the hardest thing that I feel is there for me to do, so I knock down in the early in the morning itself. Okay, so and when I do that, it gives me that feeling that I'm working on myself, some kind of accomplishment का मेरे को एक feel आता है जब मैं वो करता हूँ तो। So what now why I'm doing this? Gratitude makes me feel that I have so much abundance in my life. That's why I do gratitude. I practice it.
कि ऑलरेडी जो मेरे पास कितनी सारी चीजें हैं जो भगवान ने दी हैं, तो लेट मी बी ग्रेटफुल फॉर दैट। दैट इज नंबर वन। पीपल हैव अ लैक माइंडसेट, क्या क्या नहीं है उस पर फोकस जाता है। पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, वाइफ नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, दे ऑल स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज डायरेक्शन। बट जो है पहले उसको अप्रिशिएट करना सीखो, तभी आपके पास आगे चीजें आएंगी। देन फिजिकल वर्कआउट के बाद देन आई basically just see what are the most important reminders I have to send in the day in my work and official जो काम होता है, तो वो मैं उसके बात करता हूँ। then I spend 1 hour with my family and everybody is working in my family, so मुझे पूरे दिन भर टाइम नहीं मिलता उनके साथ स्पेंड करने को। so next 1 hour is for my family because I want to spend my time with them, right? I love that part. Then I move on, then I open my laptop and start working, and then I, of course, then I do journaling as well, gratitude, basically what my goals and all that stuff. Daily I write them. Why? My subconscious mind के बार बार remind कराने को कि these are my goals I want to achieve, these are the things that I'm grateful for and everything. So that's I do journaling, and then I move into my work, and then I start performing my work again. Everything is scheduled in my day, everything is there in the calendar। किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे खाना खाना है, किस टाइम पे कौन सा खाना खाना है, एज डाइट का प्लान बेसिकली। so everything is there in the calendar itself, so it's not about the how many habits you need, it's about what kind of habits you are having। लोगों के लिए फन एंटरटेनमेंट के लिए 2-2 घंटे टीवी पे बिता देते हैं। लेट मी टेल यू, व्हेन आई वाज 16-17 तब से मैंने टीवी देखा ही नहीं है। आई हार्डली वॉच टीवी इन माय फैमिली। वी डू नॉट हैव दैट हैबिट। वो अपब्रिंगिंग के अंदर ही इस तरीके से बताया गया था। सो जस्ट रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट हैबिट्स यू नीड in your according to your goals, and then decide, okay, this is how I want to do it। and your environment matters a lot, absolutely, Arpit, you have rightly mentioned your environment matters a lot। that's true, that's true। so I would always recommend, अगर आपको स्टार्ट करनी है कोई चीज, तो आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हो। बिकॉज जब आप मेडिटेशन करना सीख जाते हो, आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हो। Right. when you start meditating, you feel a calm, you feel you understand, एक तो उसका आपको फोकस बढ़ता है, बिकॉज यू Hmm. स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग। ये सबसे इजिएस्ट है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो मैं काफी मतलब साल से जिसने मुझे हेल्प किया है, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। although I'm not a meditation teacher and all and guru, nothing like that, I just focus on my breathing, close my eyes, and just feel okay, Right. inhaling, exhaling for 5 minutes। just by doing that I started to know myself first कि मेरे को थोड़ा एक ठहराव आता है आपकी लाइफ में, you don't, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कहीं पे कोई फोन नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद योरसेल्फ इन नोइंग योरसेल्फ। सो जब आप वो रिफ्लेक्ट बैक करते हो, थॉट्स आते रहेंगे, लेट देम कम, लेट देम गो, डू नॉट फोकस ऑन थॉट्स, ओनली फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आपका फोकस बढ़ेगा, यू विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन। पहले कोई एक हैबिट को आप मास्टर कर लो, कोई भी एक हैबिट, कोई भी एक हैबिट हो सकती है, उसको मास्टर आप शुरू करो, उसको मास्टर करना, एंड देन स्लोली स्लोली आप बाकी हैबिट्स को डेवलप करना शुरू कर सकते हो। सो दैट विल बी माय आंसर टू पीपल हु वांट टू नो हाउ टू बिल्ड एनी हैबिट और हाउ टू बिल्ड सो मेनी हैबिट इन योर डे। फोकस ऑन वन हैबिट इफ यू वांट टू स्टे कंसिस्टेंट इनिशियली। वो आपका फिजिकल वर्कआउट हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसके साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है। Okay. बाकी मैं चीजें आगे शेयर करूंगा कंसिस्टेंसी के पार्ट में। अगर ये क्वेश्चन आई थिंक ओवर टू यू जैस्मीन, आई थिंक इनका कोई एंड नहीं है आंसर्स का, आई विल कीप ऑन स्पीकिंग ऑन देम, Right. देयर आर सो We मेनी have one क्वेश्चंस। question from some tips so that I can incorporate mindfulness or meditation practice into my daily routine to support my habit building efforts. I ओके guess सो Sachin, या, yes. शैल आई आंसर और व्हाट वी आर डूइंग? नहीं नहीं, please answer it. Okay, so in that case, as I share with you, start your day, do that one habit consistently for, like let's suppose मैं मेडिटेशन का एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आपने मेडिटेशन की बात करी है। सुबह जब भी आप उठो, ये आप अपना गोल बना लीजिए, अपने कैलेंडर में भी ऐड कर लीजिए दैट सुबह उठने के बाद पहले 5 से 10 मिनट आई विल डू माई मेडिटेशन, आई विल फोकस ऑन माई ब्रेथ। वो आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, आप पार्क में जाके भी कर सकते हो, दोनों में वर्क करता है। ओके, सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरे को कहीं और जाके करना है। ऑफ कोर्स इन नेचर में करोगे तो आपको बेटर रहेगा, बिकॉज यू आर कनेक्ट नॉट कनेक्टिंग, यू आर बेसिकली आउट इन द नेचर, तो फ्रेश एयर एंड ऑल दैट स्टफ, वो इन्वायरमेंट आपका चेंज होगा। घर में रहते हैं तो यू ऑल नो कि वो एक इन्वायरमेंटल का इफेक्ट पड़ता ही है। तो सुबह 5 बजे, सुबह जब भी आप उठो, पहले 5 मिनट मेरे को मेडिटेशन करना है, मेरे को अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है,
Add that into your calendar and just focus on that. मेरे को कोई काम नहीं करना सुबह रोज 5 बजे, and do it for next 30 days, 21 days, just to start. The ओके। more you're going to do it, you start realizing कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका और आपके माइंडफुलनेस बढ़ रही है एंड ऑल. कोई हास्ट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसी हाई टेक्निक भी नहीं है कि कोई जादू मंत्र हो जाएगा उनसे. बट यू विल सी देयर इज समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन यू. आप थोड़े डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलेगा. आप जल्दी से गुस्से में नहीं आओगे. आप जल्दी से अपना फोकस लूज नहीं करोगे. आप अपनी कंसंट्रेशन लूज नहीं करोगे. एंड यू फील अ काम. वो एक थिंग्स यू विल इमोशनली यू विल फील यू कैन आप एक डिफरेंट पर्सन बनते चले जाओगे. और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी लाने में भी. आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सकते हो. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट एवरी डे फॉर फर्स्ट 5 minutes. बस ज्यादा बड़ा गोल नहीं है. सुबह उठने के 5 मिनट बाद में कोई ये हैबिट करनी है, या 10 मिनट, वट एवर. या अगर सुबह टाइम नहीं है तो कोई एक टाइम फिक्स कर लो डेली बेसिस पे. 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, वट एवर. सो फिक्स दैट टाइम एंड डू इट कंसिस्टेंटली. Yeah, over to you. There is one another question. I guess ये हम लोग आगे आंसर भी करने वाले. The most effective way to build a new habit. Yeah, I will share that. I think we will answer in the consistency part. कंसिस्टेंस। तो अभी चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे कि कंसिस्टेंस कैसे कर सकते हैं, कंसिस्टेंट कैसे रहना है अपनी हैबिट्स को लेके, वो बताओ। All right. So I think consistency का जो part है, I think I will cover all the question that has been asked कि कैसे आप हैबिट भी बिल्ड कर सकते हो और कैसे ऑल दो स्टफ आप करते हो. राइट। सो कंसिस्टेंसी के लिए अगेन एक 3 step फॉर्मूला है, मैं आपको शेयर करूंगा इसमें, जो मैंने अपनी बुक में भी लिखा है एंड आई थिंक आई शेयर एवरीवेयर, सो दैट इफ समबडी कैन रियली find it useful and implement that. So सबसे important I would recommend is it's a CBA formula. Although मैं इसको reverse ABC बोलता हूँ, CBA. Okay, C means clarity. And वो वाला part फिर से आ जाता है know yourself, be very clear. Let's suppose right now you are having some goals. Okay, what kind of person you want to become? Write down on a piece of paper who you want to become. Your financial goals, your relationship goals, your spiritual goals, family goals, whatever, intellectual goals, जो भी चीजें हैं, write them down. What kind of person you want to become? I have done all these activities in 2018. I started in 2018, then I started getting clarity 2020 तक I was very absolute clear कि मुझे कहाँ जा रहा हूँ, कैसे क्या रहा हूँ, और अभी तो और clarity वो बढ़ी गई है. So the more you're gonna work on that, the better you feel. I'm sharing from my personal experience. Write down this who you want to be. मैं ये नहीं कह रहा 10 साल बाद क्या करना है. जैसे राइट डाउन 2-3 साल में आप कैसे देखते हो अपने आप को. इफ यू आर वर्किंग इन अ जॉब, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ. ओके, इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ फिजिकली, यू हैव हेल्थ गोल्स. आपके क्या हेल्थ गोल्स हैं, आप हाउ यू आर फीलिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ. सो राइट देम डाउन. इट्स एक्टिविटी. एंड जब आप लिखना शुरू कर देते हो तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जो थॉट्स का खिचड़ी बनती रहती है ना, वो नहीं बनेगा. बिकॉज नाउ यू हैव पुट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. सो आपके हैंड राइटिंग के थ्रू और हैंड्स के थ्रू, that thought that is there, or the dream or the wish or the desire that is there, is now on the paper. Now you can see it in front of you. Okay, that is number one. So have a clarity what kind of person you want to become. Once that clarity is there, you know who you want to become. Ask yourself what habits you need in order to reach there. For example, my goal is to earn certain amount of money, for example, okay, in my business. Then how I can make that money? By helping more people, or by selling my product and services to that number of people. Let's suppose एक 100 रुपए का मेरा प्रोडक्ट है और मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है, तो मैं कितने लोगों को उनको बेच सकता हूँ? 1000 लोगों को मुझे जाके वो बेचना होगा. सिंपल. ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हो गया. एवरी डे आई हैव टू गो एंड मार्केट एंड सेल. अगर मेरा गोल है 1-2 महीने में मुझे ये जितना पैसा कमाना है, तो एवरी डे मुझे उसको ब्रेक डाउन करना है कि मेरा डेली का गोल ये हो गया, या मेरा वीक का गोल ये हो गया, या मेरे मंथ का गोल ये हो गया. तो इस तरीके से वो मेरी हैबिट बनेगी अब कि मुझे डेली मार्केट करना है और मुझे डेली सेल करना है. अब उसके लिए लोग चाहिए होंगे. अब एक होता है पेड एड्स का तरीका, होता है आप एड्स में डालो तो आप रीच करते हो. दूसरा आप ऑर्गेनिक होता है कि आप खुद जाके टीएम कर रहे हो, लोगों को टच बेस कर रहे हो. राइट। तो ये मेरा एक डे का मेरा वर्क एक हैबिट बन गया कि मुझे ये पैसे कमाना है. अगर मुझे इतना, तो मुझे इतने लोगों को सेल करना होगा या वो करना होगा. तो ये मेरा इस तरीके से एक गोल बन गया. आई होप दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल. सिमिलरली एक अलग गोल क्या हो सकता है, आई वॉन्ट टू रीड दीज मेनी नंबर ऑफ बुक्स इन अ ईयर.
ओके, ये मेरा गोल होता है। जैसे मैं एवरी वीक आई रीड वन बुक, तो 50 बुक मेरा पढ़ने का गोल है इस साल में, फॉर एग्जाम्पल। अगर मुझे 50 बुक्स पढ़नी है तो मुझे क्या करना होगा? एवरी एवरी मंथ 4 बुक ऑन एन एवरेज कंप्लीट करनी होंगी। दैट मीन्स राइट। 4 वीक हो गए, 4 बुक, 1 वीक में 1 बुक मुझे कंप्लीट करनी है। अब एक बुक में एक एवरेज साइज होता है 250 पेजेस का होता है कोई भी बुक। तो मुझे डेली पे कितने काम करना होगा? अराउंड 30 टू 40 राइट, 7 इंटू या 40 पेजेस मुझे डेली पढ़ने हैं। दैट्स इट। अगर राइट। मैं डेली बेसिस पे 40 पेजेस पढ़ पाऊंगा, मेरा जो एक साल का गोल है 50 बुक पढ़ने का, वो कंप्लीट हो जाएगा। So that's how, ask yourself what kind of person you want to become and then design your habits. Okay, that's how you design your habits and then fit them into your schedule. Morning में time है, evening में time है, afternoon में time है, early morning उठना है कहाँ, design, then put them into order. First write down your habits that is required and then put them into your schedule. Put them in the morning. Use Google Calendar, schedule them and all. Once that clarity is there, देन ब्रेक इट डाउन। जैसे मैंने बताया, मैंने पूरा आपको ब्रेक डाउन करके बताया, राइट, कि आप डेली बेसिस पे इतना गोल है तो कैसे। तो सेकंड स्टेप इज बी, दैट इज ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू हैबिट्स। अगर आपका ये फोकस है कि मुझे इतना वेट लूज करना है इतने टाइम में, तो आपको गोल होना चाहिए कि मैं डेली बेसिस पे मुझे एक्सरसाइज करनी है, ये मेरा गोल है। ऑल्दो एंड गोल इज टू रीच एंड टू रिड्यूस माई वेट। फॉर दैट, टू थिंग्स आई नीड टू डू। आई नीड टू लुक व्हाट आई एम ईटिंग इन अ डे, what all I am eating in a day. Second, how much calorie I am burning or what kind of physical workout I am doing, or a walk, Right. or whatever number of steps you are taking. So that is Mm-hmm. step number two. So you need to break them down in daily actionable steps. लोगों Right. का काम क्या होता है, यहीं पे वो ओवरवेल्म फील करते हैं और यहीं पे वो छोड़ देते हैं। यार ये काम इतना सारा करना पड़ेगा, नहीं हो रहा। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन छोड़ के भाग जाएंगे, भाई नियमित से तो नहीं हो रहा। फिर हाँ चल ये काम करने रहा, किसी ने कुछ आइडिया दी थी, हाँ ये करते हैं शुरू, चलो ये करते हैं, एंड देन दे Right. ड्रॉप इन बिटवीन। सो यू नीड टू ब्रेक इट डाउन लाइक डेली एक्शनेबल स्टेप्स। आपको इस तरीके से उसको लेना होगा। एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। Here you need to have an accountability partner. Here you need somebody who can ask you tough questions. Here you need somebody who can push you and say and slap you as well if required. Hey, what you are doing? ये मेरे को गोल मतलब, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए, या आप एक कम्युनिटी का पार्ट हो, या आपके पास ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए या फैमिली मेंबर्स होने चाहिए जिसके साथ आप वो गोल शेयर कर सको। You need to have somebody so that you can share those goals that you are having with someone, एंड वो आपकी हेल्प करें। वो अगेन ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपके वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी के मेंबर्स हो सकते हैं जिसका आप पार्ट हो। शेयर योर गोल्स विद देम एंड टेल देम ये मेरे गोल्स हैं, ये मुझे अचीव करना है। जब भी आपको लगे कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी जो डेली हैबिट्स है मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, आस्क मी क्वेश्चंस, व्हाई, हे व्हाट्स द प्रोग्रेस, काम क्यों नहीं कर रहे हो, आपने बता था ये आपकी हैबिट्स हैं। गिव देम द फुल लिबर्टी टू स्लैप यू एज वेल। स्लैप नॉट इन स्लैप इन लिटिल टर्म्स, आई मीन स्लैप यू मतलब वेक यू अप, हे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू टोल्ड मी दैट यू आर हैविंग दिस गोल। सो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को रिक्वायरमेंट है उसकी। इवन आई ऑल्सो नीड एट टाइम्स, and I have my accountability partner as well. I share all my goals with them, and they ask me, "Hey Sachin, you're missing out on this." I said, "Hey, thank you so much for letting me know," and then I quickly jump back. और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने कर लिया खत्म हो गया, नो, बिकॉज आपके गोल्स तो खत्म नहीं होने वाले, राइट। आई एम श्योर यू Keep ऑलवेज on गोना हैव changing. डिजायर्स। आज ये घर Yes. है तो कल को कुछ और घर लेना है, आज ये गाड़ी है कल को कुछ और लेनी है, तो आपके डिजायर तो एंडलेस है। तो मतलब आपको कॉन्शियसली फोकस करते रहना है कि आप कहाँ आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो, और आपके पास अकाउंटिंग पार्टनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर 3 सिंपल स्टेप्स। अगर आपने ये फॉलो कर लिए, यू विल सी अ कंप्लीट चेंज इन योर सेल्फ, आई एम श्योर। ओके, clarity, once again reminding you, clarity on your goals, and then ask what habits you need, write them down, then break it down in a daily actionable steps। मेरा गोल एंड गोल ये है, लेकिन आज इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ। अगर मेरा गोल है कुछ करना, बट आज क्या करूं उसके लिए मैं, बिकॉज Mm-hmm. फ्यूचर तो आपको नहीं पता, मेरे पास तो अभी का प्रेजेंट मोमेंट है, इसमें इस टाइम पे मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ। तो डिजाइन Right. योर डे, आप वो ऑर्डर में डालिए अपनी हैबिट्स को। 6 बजे मैं ये काम करना है, 7 बजे मेरा ये रूल है। सो डिजाइन एवरीथिंग। सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैव अ शेड्यूल इन एडवांस, and they use Google Calendar, simple tool होता है। Every task they perform in their day, that is there in their schedule, in their calendar।
So put there in your schedule, and then accountability is important. So this is my share, Jasmine, on how to stay consistent, how to avoid procrastination. ये सारा चीजें उसमें cover हो जाती हैं. It's all boils down to know yourself, know your goals, why you want to achieve them, and then have somebody who can, wake you up Push you when you're back. not in a rush. Like you, I'm having you in my life as a mentor. Yeah. That's good. I'm great, great. Yeah, absolutely. Similarly, I'm having somebody in my life as well who is a mentor. So it's important, right? It's important when you invest in yourself, it gives you that result. So yeah, this is it. This is my answer on consistency. थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग एक्चुअली। इतना सिंपली आपने वो बताया कि लाइक कैसे हम अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं या कैसे उनके साथ कंसिस्टेंट रह सकते हैं। आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट तो बनता है सचिन के लिए भी। कमेंट बॉक्स खाली क्यों अभी तक? टाइप इट आउट समथिंग। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। I think they are processing whatever I have said, maybe writing it down somewhere. वो ये डाइजेशन में टाइम लगता है, जैसे कल रात को भी हुआ था। सो वी आर डूइंग रियली अमेजिंग इन अदर पार्ट्स एज वेल। Yeah. तो गाइज आपको और कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं? आई गेस आज का बिल्कुल कंसिस्टेंट रखते हैं, फोकस रखते हैं कि हैबिट्स को कैसे डेवलप करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सचिन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के थ्रू भी। सचिन विल लेट यू नो कि व्हाट वेबसाइट क्या है। अगर किसी को स्पेशल कंसल्टेशन चाहिए सचिन से, राइट, आप इनकी बुक भी पढ़ सकते हो। सो इट्स ऑल गुड। कोच Yeah. सर्कल से गुड गोइंग सचिन एंड जैस्मिन। थैंक यू कोच सर्कल। सो Okay. सचिन आप बता दो अपने वेबसाइट सो दैट इफ समबडी Sure. वांट्स टू हैव Sure. Sure. कांटेक्ट विद। Sure. So yeah, I do have a lot of free ebooks. If somebody wants, I can share. Like I have ebook on how to stay consistent and all that stuff. So I can offer that as well. And then the website that you can go is in diaconsulting.com/VSL. There I created a short 15-minute free video for you how to stay consistent. And if you are somebody who's into sales, it will really help you. I'll share my strategies that I've followed in order to grow your sales process. But overall, it's all it will also will help you in time management, procrastination, everything as well. So yeah, you can check it out, theconsulting.com/VSL. And if you want any kind of free ebook, free course, just in the mention in the comment section, and I will connect with you and I will share with you personally. श्योर। Yeah. थैंक यू सो मच। आई गेस इट्स बिन अमेजिंग। सब लोग डालना शुरू हो गए, लवली सेशन। एंड लोगों ने Yeah. स्टार्टिंग में ही डाल दिया था कि यस इट्स बिन गुड, कि आज काफी दिनों के बाद उनको सेशन अच्छा लगा। सो थैंक यू सचिन फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस द बेस्टेस्ट सेशन। ऑफ कोर्स Thank गाइस, you. कहते हैं ना एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो ये एक्सपीरियंस पर्सन का वो एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है, दिल से बातें आ रही है सारी। इट्स नथिंग लाइक कि कुछ स्क्रिप्टेड है, कुछ है डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, राइट सचिन? Thank you. Thank you. Absolutely. Absolutely. Thank you so much, Jasmine, for inviting. And thank you so much, everyone, for joining and, राइट। mentioning on the comment section. Still, if you have any question left, you can again DM me or you can mention in the comment section. I think better you can connect with me. I will share. I will share your like. I will answer your queries. And yeah, it was really lovely connecting. You know, with all of you and sharing my insights. Right. I guess one question is coming up. Narendra Shinde is saying, I want. Narendra ji, what you want? You have a question or you want to connect with Sachin? क्या चाहते हो? मजा आ गया. विनीता की कमी महसूस नहीं हुई। नाइस। Great. So Okay. I guess if somebody has still any question, please आप सचिन को DM कर सकते हो, उनकी वेबसाइट से जाके उनको कनेक्ट कर सकते हो। That's all. So thank you Sachin once again for joining with me and with our lovely audience जो हमेशा हमारे साथ रेगुलर आते हैं। So thank you everyone for joining us today as well and making this session the bestest session ever. सो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आए तो प्लीज जाके लाइक जरूर कर दो, क्योंकि ये वीडियो उतनी ही ज्यादा रीच आउट करेगी सबके साथ। सो थैंक यू वंस अगेन। सो वी आर गुड टू साइन ऑफ। सो Thank थैंक you. यू। यू आर Yeah, thank you. लव यू। Thank you, Jasmine, once again, and thank you,